एंड मुस्कान दिल जश्न जश्न बोले जो गाना बना है वर्ल्ड एंथम, आई गेस वो सारा इंडिया यही गा रहा होगा अभी, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया को इंडिया ने ऑल आउट कर दिया है, एंड दैट टू बिफोर 50 overs, like only by a couple of balls, but still पूरा ऑल आउट कर दिया. 199. Yes. 200 भी नहीं बनाने दिया, और ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी अच्छी है. और कहाँ हम बात कर रहे थे इससे पहले वाली फर्स्ट लाइव में, that what are the chances कि ऑस्ट्रेलिया इतनी familiar है with Indian conditions and that they'll just go crazy when they come to bat. But I think Indian bowlers ने काफी अच्छे से आज bowling करी है. There have been a couple of things here and there, but all in all I feel Indian bowlers ने काफी अच्छी bowling करी है to be able to restrict Australia at a total of 199. It's actually a big deal. किसी को भी हाफ सेंचुरी तक तो पहुंचने ही नहीं दिया. एग्जैक्टली. एंड जब हम लोग बात कर रहे थे कि संदीपन जो हमारे कोरेस्पोंडेंट संदीपन एंड विमल सर दोनों, उन्होंने भी बोला था कि एटलीस्ट इट्स अ डिसेंट विकेट, तो एक्सपेक्ट कर रहे 250 260 का स्कोर बनेगा. लेकिन आई गेस क्रेडिट गोज टू इंडियन बॉलर्स. बुमराह स्टार्टेड द कार्नेज, वो मिचेल मार्श का विकेट लेके, उसके बाद कुलदीप आए, जडेजा, लेकिन हम जडेजा की बात जरूर करेंगे यहाँ पर, बिकॉज बहुत सारे उनके क्रिटिक्स थे. वन क्रिकेट में भी हम लोग काफी उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे. आर यू टेकिंग अ dig at me? No, I'm not. तो हम लोग वन क्रिकेट में भी काफी थे कि जडेजा hasn't performed उनके रेपुटेशन के हिसाब से, बट टुडे that ball to Steve Smith, ball of the tournament अभी तक. Yeah, I totally agree with you. I think his entire spell, especially that over when he got 2 wickets in the same over, that was actually really well and really commendable from him. So, talking about Shubman Gill missing out, I really wanted to touch this topic in the morning also. Shubman Gill, कितना ज्यादा हम वेट कर रहे थे कि कब शुभमन गिल आएंगे, he'll get to bat. Yes. He didn't get to bat, but then we had Ishan Kishan. I think अभी तक ईशान किशन ने फील्डिंग बहुत अच्छी करी है. That is where I actually wanted to come from. शुभमन गिल से ईशान किशन पे आना था कि उन्होंने फील्डिंग काफी अच्छी करी है. We saw him restrict a couple of fours that could have been hit. So he's done really well. What do you think? How would he perform when it comes to batting as an opener in place of शुभमन गिल? जो मैं बोल रहा हूँ उसका उल्टा ही हो रहा है. But I still let's not talk. जो हमने नेक्स्ट में देखा था उनको, जो हमारे वन क्रिकेट के विजुअल्स आए थे जो संदीप सर ने भेजे थे, उसमें ये था कि he looked shaky against the Pacers. I hope, and I guess संदीप सर ज्वाइन कर चुके हैं हमारे साथ. Hello संदीप सर, am I audible? Hello. Yes, you guys are audible. Yes, you guys are audible. Okay sir, so we were talking like जो हमारा वो डिस्कशन हो रहा था, प्री मैच डिस्कशन, कि you were expecting a decent score from Australia, but suddenly just 199 on the board, and India will really be feeling कि यहाँ पे तो we can easily win this match. What's your take on this? Well, I think first of all it was a good loss India, because मुझे ये लग रहा था कि अगर इंडिया ये था they would have definitely chased, लेकिन विकेट जो मुझे लगा ना with the wicket, थोड़ा सा मुझे लगा कि this is more of a मुझे इंडोर टेस्ट मैच का याद आ गया. Day one of that indoor test match wicket, क्योंकि थोड़ा सा सॉफ्ट था, आपने देखा होगा, थोड़ा सा जो puff of dust was coming out. Yes, exactly. Ball was gripping of course, and uneven bounce was also there. So I believe जो मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने शायद ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से देखे तो they wanted to post a total, and then they wanted to put pressure on the Indians, but some of their short selections were not exactly. I won't play those shots on that wicket. So अगर मुझे लग रहा है कि उन्होंने जो estimated अपना target था, they thought that okay they can reach 280 270. I think उसको थोड़ा सा अगर 240 250 करते तो मुझे लग रहा है कि एक competitive total ऑस्ट्रेलिया पहुंच सकती थी. हालांकि 200 again on this wicket, which is a bit tacky. It should not be a problem for India, but they should not lose wicket up front. That is going to be the key. You have to play the old-fashioned, one-day cricket. And sir, do you feel that Australia was slightly defensive in their batting approach? क्योंकि हमें लगा जब spinners आ गए थे, they were slightly defensive. Steve Smith and Warner, and then obviously Labuschagne, and the pattern continued कि वो defensive हो गए, and they never got a chance to capitalize on Indian bowling. Even in between when Maxwell and
carry? I think Maxwell Yes. carry would win. Okay, it will be out. But still. Uh-huh. So your take on this? I think yes. So you are right actually. I would not blame Australia because उनके wickets उनका कभी एक लंबा पार्टनरशिप बनाने का मौका ही नहीं मिला Hmm. क्योंकि दे लॉस्ट विकेट इन रेगुलर इंटरवल्स. तो जब भी कोई पार्टनरशिप बनता हुआ दिख रहा था तभी इंडिया गॉट बैक विद अ विकेट. So Hmm. they wanted to play the safe game. They wanted to keep wickets in hand going into the last 10 overs. But जैसा कि विकेट था उनको वो स्ट्रेटेजी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बैकफायर भी कर गया. वो स्ट्रैटेजी बैकफायर किया है बट स्ट्रैटेजी उनकी बैकफायर करी बट देयर वाज वन पर्सन हु आई थॉट bowled exceptionally well, talking about Ravindra Jadeja. That wicket of I guess Steve Smith Absolutely. turned the game in India's hands because तब तक लगा था कि Steve Absolutely. Smith लंबा खेल जाए तो ऑस्ट्रेलिया कैन पोस्ट अ बिग टोटल बट जस्ट उनका रिएक्शन भी स्टीव स्मिथ कैसे ही था कि ही वाज शॉक्ड कि from where did this ball come from. So I think your take on Ravindra Jadeja's performance today because I thought he was spectacular in his so-called second home. Absolutely. You are right. So Steve Smith is a kind of a batsman who would have been ideal on this kind of pitches. He would have played, Yes. he's a good player of spin. He would have played, scored a 65 ball 50 or something like that. That would have given Australia something, a challenging total on on that wicket. But जैसे जडेजा ने उनको आउट किया, that ball was, of course, you have to give. Yes. And Jadeja being the home guy over here, home boy, CSK guy. And also it's very important. देखिए जडेजा के ऊपर रिसेंटली ये क्रिटिसिज्म हो रहा था कि मिडिल ओवर्स में वो विकेट नहीं ले रहे हैं. तो दिस हमने एशिया कप में भी ये क्रिटिसिज्म हमने जडेजा के ऊपर देखा. लेकिन कमिंग इनटू दिस गेम, फर्स्ट गेम ऑफ द वर्ल्ड कप, Jadeja taking wickets in the middle overs, it is a huge sigh of relief for the Indian team management. I can tell you that. And sir, in the upcoming innings now that India has to chase down 200 runs, what do you think about Adam Zampa? Because he's a very strong spinner, especially when it comes to conditions that are there right now. So do you think that Adam Zampa would be crucial in knocking over the top order, or he would trouble the Indian batters? What's your take on that? Adam Zampa will be the threat, of course. He will be the probably the biggest threat for the Indian batters. Let's not forget Maxwell, क्योंकि ऐसे तो मुझे लग रहा है कि मैक्सवेल भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं. You won't be surprised if someone like Labuschagne also bowls. So I think Australia will, and also they kind of wicket to wicket who bowls medium pace, the likes of maybe someone like Hazelwood, someone like Chris Green, क्योंकि वो विकेट टू विकेट बॉलर है, बहुत सा नीचे रहता है, तो फिर वो भी एक थ्रेट हो सकते हैं. बट ऑफ कोर्स द बिगेस्ट थ्रेट विल कम फ्रॉम एडी रूसर. should not lose to but एक मुझे लग रहा है कि जो एडम जंपा है, हालांकि वो he'll be big threat, but वो जो है उनका बॉल अब देखेंगे, if you look at the percentage of balls that hits the stumps, I mean when Adam Zampa bowls, it's much lower compared to someone like maybe someone like जडेजा और अक्षर पटेल, क्योंकि जडेजा अक्षर पटेल जैसे बॉलर ऐसे विकेट के लिए आइडियल है, क्योंकि वो विकेट टू विकेट डालते हैं. जंपा कभी उसका बॉल ज्यादा स्पिन करके आपको ऑफ स्टंप मिस करेगा, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास वैसा एक विकेट टू विकेट बॉलर इस विकेट के लिए मुझे लग रहा है कि नहीं है उनके पास. Someone like Aston Agar kind of a bowler they would have probably liked to have on this kind of a pitch. And last time जब Aston Agar ने टूर किया था इंडिया, सॉफ्ट है तो आपको पता ही होगा कि सॉफ्ट विकेट में आपको कितना मुश्किल होता है लेंथ को जज करना एज ए बैटर. तो आप इंडियन टीम के लिए ये चैलेंज होगा कि आप लेंथ को ठीक तरीके से जज कीजिए. Australian, we have seen that some of the Australian batters also they struggle. They have played so much cricket in India. They have played the 3-match ODI series just before the World Cup. Yet they misjudge lengths on this pitch. So it is a difficult pitch to bat on. It is definitely a difficult pitch to bat on. But I think under lights,
थोड़ा सा बेटर होगा कंडीशन। और मुझे ये भी लग रहा है कि यहाँ पर थोड़ा सा जो है अगर ड्यू फैक्टर होता है, मुझे आई डोंट नो कि हाउ कितना होगा, लेकिन अगर होता है तो दैट विल बॉल विल स्किड एंड दैट विल फेवर द इंडियन बैटर। एब्सोल्युटली सर। और अभी हमने बात करी रविंद्र जडेजा की, बट आई गेस उनके जो साथीदार थे कुलदीप यादव, वी नीड टू टॉक अबाउट हिम एज वेल। कुलदीप यादव, क्योंकि यस, बिकॉज एक जो हम कहते हैं एशिया कप के टाइम पे भी कि कुलदीप यादव 2.0 निकले, ये ही इज कॉन्फिडेंट अंडर रोहित। उनको बोला गया, उनको एक मेगा से डर निकल गया उनके माइंड से, जो एक मेंटल ब्लॉकेज जो कह सकते हैं, एंड ही इज लुक्ड अ कंप्लीटली डिफरेंट बॉलर। और आई गेस आगे जाके भी वो एक बड़े थ्रेट रहेंगे इस टूर्नामेंट में अगेंस्ट द अदर टीम्स एज वेल। जी हाँ, कुलदीप यादव को इस कमिंग इनटू दिस वर्ल्ड कप, कुलदीप यादव हैज बीन एक्सपेक्टेड टू बी द प्रीमियर विकेट टेकर इन द मिडिल ओवर, क्योंकि इंडिया ने रिसेंटली जो है, आप रिसेंट अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो इंडिया ने मिडिल ओवर्स में विकेट लेने में स्ट्रगल किया था। तो कुलदीप यादव has been given the role. We are using you as an attacking option. Your primary job is to take wickets, not tying down the run rate. कुलदीप यादव का मेन काम जो है वो विकेट लेना है, और आज हमने देखा उन्होंने अपना रोल जो है बखूबी पालन किया। तो या आई मीन कुलदीप यादव जो 2.0 आप बोल रहे हैं, कुलदीप यादव का जो एक उनका एड भी रिसेंटली आया था कि अब मेरा कमबैक का सीजन चल रहा है, तो सब थिंग्स आर फॉलिंग, थिंग्स आर हैपनिंग फॉर मी। बट यस, कुलदीप यादव नॉट ओनली ऑन दिस गेम, ऑन ए ट्रू बैटिंग विकेट आल्सो, आई थिंक कुलदीप यादव विल बी द की। आपने देखा होगा एशिया कप में भी उन्होंने बहुत अच्छा बॉलिंग किया था, उससे पहले भी। तो कुलदीप यादव पूरे वर्ल्ड कप में I am predicting Kuldeep Yadav to be India's highest wicket taker in this World Cup. And sir, before we wrap things up, because I guess कुछ ही देर में innings start हो जाएगी, and I'm sure आपको जाना पड़ेगा. If India is winning, which we really hope, आपने भी कहा कि India should win this game. How many wickets are you expecting कि India कितने wickets से ये मैच जीतेगा? Will the Australian bowlers trouble the Indian batting lineup? देखिए, कितने विकेट से जीतेगा ये बोलना मुश्किल है, डिपेंड्स ऑन द स्टार्ट। अगर इंडिया 30 for 4 हो जाता है तो फिर मैच इंटरेस्टिंग हो जाएगा, लेकिन और ऐसे विकेट में हो भी सकता है। मिचेल स्टार्क, पैट का मुझे नहीं लग रहा कितना बड़ा थ्रेट होंगे, बट समवन लाइक मिचेल स्टार्क जो विकेट टू विकेट बॉलर्स हैं, दे आर द बिगेस्ट थ्रेट। तो ऐसे कंडीशन में इंडिया अगर टॉप ऑर्डर में 2 विकेट जल्दी लूज कर दे तो फिर थोड़ा सा ट्रबल हो सकता है, बट I think the Indians will take their time. Indian batters will take their time. तो अगर ये चेस भी करते हैं तो डेफिनेटली 40 ओवर तो बैटिंग करेंगे इंडियन टीम, अनटिल अनलेस के बहुत इजी हो जाए, जो मुझे नहीं लग रहा है होगा, क्योंकि ड्यू अभी तो सारा, हालांकि 620 625 भी हुआ है, लेकिन ड्यू फैक्टर अभी उतना नहीं होगा, जितना भी होगा 8 बजे के बाद होगा। सर एक क्वेश्चन है बिफोर वी रैप थिंग्स अप। क्वेश्चन है कोडिंग शिक्षा कि डू यू एग्री दैट द पिच वाज अप टू द मार्क फॉर द आईसीसी वर्ल्ड कप with so much turn on offer, and we want at least a 270 runs total? But I personally feel इसका आंसर आप करें। इसके पहले मैं जरूरी कहना चाहूंगा कि पिछला मैच जो हमने देखा था उसमें 400 बने थे, एंड अगर 400 बने थे तो भी लोगों को इशू था कि भाई 400 बने हैं, हाईवेज है, वी वोंट गेट सच पिच इन वर्ल्ड कप, ये वर्ल्ड कप में ये कैसे पिचेस हैं। अब अगर 220 क्लोज स्कोर है उसमें भी इशू है। सो आई फील डिफरेंट, ये तो चैलेंज है एज अ टीम कि आपको अडेप्ट करना पड़ेगा डिफरेंट चैलेंजेस के हिसाब से। देयर विल बी वेन्यूज जैसे चिन्नास्वामी हो गया, वानखेड़े हो गया, जहाँ पे आप देखोगे 300 350 400 वेन्यूज लाइक चेन्नई या थोड़ा और दिल्ली हो गया, मे बी वहां देखोगे लो स्कोर हो सकता है। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ वर्ल्ड कप। बट योर टेक ऑन दिस, संदीपन सर? I would like to go with the view of our viewers. मुझे भी ये लग रहा था कि आईसीसी इवेंट, दिस इज प्रोबेबली माय 9th आईसीसी इवेंट, और आईसीसी इवेंट में मैंने देखा है कि जनरली विकेट जो होते हैं वो मोर और लेस बैटिंग फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि द ब्रॉडकास्टर्स, द स्टेक होल्डर्स, दे वांट हाई स्कोरिंग मैचेस, क्योंकि हाई स्कोरिंग मैचेस से यू कैन अर्न रेवेन्यूज। द मैच जितना लंबा चलेगा ब्रॉडकास्टर को भी फायदा होता है। तो लो स्कोरिंग विकेट जो है obviously it has favored the Indian team, that is okay, but मुझे ये लग रहा था कि I think consider it as a World Cup match,
थोड़ा सा बेटर विकेट हम प्रिपेयर कर सकते थे। जैसे हम बाइलैटरल में इंडिया के होम सीरीज बाइलैटरल में देखते थे, आई वाज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग दैट काइंड ऑफ अ विकेट। Exactly, which was high scoring, and I guess batters को help मिली थी उसमें, but well, can't do anything up. Which You so is you need to almost have some balance, right? You need to yes. have you need to have some balance. That's what I feel, that you need to have some balance. Bowlers के लिए भी कुछ हो, बैटर्स के लिए भी कुछ हो, तो ऐसा होना चाहिए। दिस विकेट यू डोंट नो, आई मीन एक्चुअली अगर इस विकेट पे न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान मैच होता है, दैट वुड हैव बीन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गेम, क्योंकि यहाँ पर न्यूजीलैंड को अफगानिस्तान से खेलना है। आई थिंक पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान आर आल्सो प्लेइंग एट दिस वेन्यू, so those are will be games to watch out for. Absolutely, and संदीपन सर हमारे जो ओपनर्स हैं वो आ चुके हैं। But you are right that definitely different, जैसे कि आप different venues में जाएंगे, conditions different होंगे। रोहित शर्मा भी ये बात कह रहे हैं कि अडेप्ट करना पड़ेगा, जो इंडियन टीम को भी अडेप्ट करना पड़ेगा, फॉरेन बाहर के टीम को भी तो करना ही पड़ेगा। जैसे कि आप कोलकाता में जाएंगे, वो हाई स्कोरिंग पिच होंगे, वहां पर देयर विल बी लॉट ऑफ बाउंस, वानखेड़े में भी बाउंस होगा, चिन्नास्वामी में हाई स्कोरिंग वेन्यू है, तो डिफरेंट कंडीशन। अहमदाबाद में आपने देखा फर्स्ट मैच जो है बहुत हाई स्कोरिंग मैच हुआ, तो डिफरेंट कंडीशन, ज्यादातर विकेट्स हाई स्कोरिंग हो गए, लेकिन ये वाला थोड़ा सा एक्सेप्शन लगा मुझे। इट्स ओके, बट आई गेस जैसे कि हम कह रहे हैं हमारे ओपनर्स आ चुके हैं, एंड फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर द इंडियन फैंस, व्हिच इज दिस टोटल, एंड सर एंजॉय द सेकंड इनिंग्स एंड होप हम वापस मिले जल्दी से, एंड यू कम आउट स्माइलिंग विद एन इंडियन। थैंक यू सो मच। Yeah, absolutely, let's hope. Thank you guys, cheers. Thank you.